Good evening, everyone. So today we'll discuss or analyze paper to syllabus. Paper to syllabus ଆମେ ଆଜି analyze କରିବା କି what is there in paper to syllabus. Paper to syllabus କ'ଣ? What is the demand of this syllabus? What is inside the syllabus? How paper 2 is connected with paper 1? How paper 2 is connected with paper 1 and also GS2. For example, this constitutional framework, it is directly মানে পলিটি গভর্নেন্স প্রিলিম হো কি মেন্স হো এটা পুরা রিলেটেড তুমি থরে পড়িব তিনটা জায়গার অ্যাপ্লিকেশন হব GS2 রে অ্যাপ্লিকেশন হব পবেড পেপর 2 রে অ্যাপ্লিকেশন হব প্রিএম্বল সেলিয়েন্ট ফিচর ফেডeralism फंडामेंटल राइट DPSP हैला बहुत इजी एथिरे किछि बुझिबार नाही प्रिएम्बल कोन सेलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरलिज्म we will discuss various type of federalism like centralized federalism, bargaining federalism, cooperative federalism, competitive federalism, and fundamental right, fundamental duty, TPSP. Okay, simple. आरा किछि नाही माने बेसिक गोटे पिला जे पॉलिटी गवर्नेंस भी पढिछि सेटा जानिथिबो. अच्छा, so just 2 minutes. Okay, so here we are discussing about public administration optional. Public administration optional for your OPSC mains and interview. Khali mains no. Now POBET is very relevant, or conceptual clarity in POBET is very relevant for your interview also. And I have written this book, BK publication, Public Administration, Odisha Civil Service Main Examination. This book you will find the syllabus, previous year unit wise question. That's the most important. माने गोटे बही रे तमे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पाई जीवो बही फास्ट रो सिलेबस भी अछि आ किछि देखियो दरकार नै सेपरेट सिलेबस क्वेश्चन ना वन स्टॉप सॉल्यूशन सिलेबस अछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि लास्ट 2011 रो नै कि 2022 जाय प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2011 to 2022 सब अछि and syllabus wise content अछि paper 1 paper 2 and some short question अछि model answer type. And this would be the approach to study public administration. If you are a new student, you must remember the syllabus, analyze the previous year question. This is must before starting anything. And yes, paper 1 analyze jo achi, paper 1 syllabus analysis ra we have 5 class, must go through it. Hela? Before reading anything, must go through those introduction class. And this is how paper 1 connected with paper 2, unit 3 connected with paper 2 central state administration, public policy with planning, personnel with public service, financial with control of public expenditure, and OCS 2022 rank 1 to rank 101. There are 11 students in public administration optional, 7 from our group. So these are first, second, third, fourth, fifth, sixth, 7. 101 rank, 10 rank, 18, 25, 44, 54, 73. So 7 from our class. This is last year SK, last year topper. These are last year people. Last year 5 people in top 100. And rank 10's mark 333, rank 18 mark 308. To authenticate that, yes, 297, rank 44 293, rank 54 327, rank 73 334. I think this is the highest mark. Rank 101 306. Okay,
सो दिस इज आउ भी बहुत लोग भल मार्क अच्छी 300 है 303 है 290 288 281 Ipsita 320 Chinmaya 306 Jagannath 325 295 281 284 318 288 300 तो खाली ऑप्शनल रही सी गॉट रैंक 486 ओके सो दिस इज मार्क एंड बहुत पिला जो मैंने सिलेक्ट भी ना दे ताकर भी बहुत भलो भलो मार्क अछि मोस्ट 280 ऊपर समस्तंकर 300 समन स्कोर 327 गोटे पिला 327 अछि still he cannot get through. So here our foundation and revision course we complete the syllabus, focus on conceptual clarity. You get both live and recording class, full syllabus. You write notes in the class based on current update and model answer and discussion of all 2011 to Ajiz and Jaha previous year question. 10 mock tests with discussion. So before mains, more than 450 question discussion kara hoga and focus given on second ARC and current update. And this is the number you can contact and this is the fees. ठीक ଅଛି okay get back to our so paper 2 unit 2 constitutional framework 3 को आसीबा 3 रे central administration in India. So I have told you that this central administration is related with paper 1 unit 3 ଏଥିରେ president prime minister you read in polity council of minister polity but most important part are the central secretariat cabinet secretariat prime minister office. These are part of staff agency or हमें secretariat who is formulate policy formulate law. So president prime minister president is head of the state prime minister is head of the government real head nominal head de jure de facto council of minister there are three group of minister council of minister cabinet minister minister of state deputy minister and minister of state again two type minister of state independent charge or minister of state attached to any cabinet minister. Yes, council of minister the PM and council are the head of the government real head. अच्छा central secretariat cabinet secretariat prime minister office देखो simple way रे बते दोची एटा कोन when you visit Delhi ଯେତେବେଳେ ତମେ Delhi visit କରିବ ଦେଖିବ this is ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ହେଲା ଏଇଟା ହେଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଯେତେବେଳେ ତମେ OS କି OFS ହବ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଭିଜିଟ୍ କରିବାକୁ ଯିବ ତ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ଗଲ ତମେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ ସାଇଡରେ ଏମିତି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି ଆକୁ କୁହାଯାଏ ନର୍ଥ ବ୍ଲକ ଆକୁ ସାଉଥ ବ୍ଲକ ହେଲା and in north block we have finance ministry home ministry and ministry of personnel ଏଠି PMO ଅଛି defense ministry ଅଛି ହେଲା PMO prime minister office for prime minister state ଆକୁ south block କୁହାଯାଏ ଆକୁ north block କୁହାଯାଏ. Apart from this in this area there is other ministry railway ministry commerce ministry सब ministry माने अछि सेठी तो what is central secretariat the word central secretariat देखो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और केंद्रीय सचिवालय
इंग्लिश हिंदी जहाँ केंद्रीय सचिवालय कहते when you visit Delhi if you have visited you सेंट्रल सेक्रेटेरिएट रे उठे बस स्टॉप भी अच्छी और मेट्रो स्टेशन भी अच्छी येलो लाइन ठीक अछि सो व्हेन यू रीच देयर जे तुम जाई न के फ्यूचर विजिट करिवो तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पहुंची तुम फील करिवो कबे तो मने पकेइबो अरे हां हां सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पढ़िछ हैला सेंट्रल सेक्रेटेरिएट किसी नो इट कंसिस्ट ऑफ ऑल मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट कोन it consists of all ministry and department of central government. It consists of all ministry and department of central government, central secretariat. ହେଲା ଏତିକି ଜାଣो डिटेल ଆମେ ଦେଖିବା सेंट्रल सेक्रेटेरिएट किए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हेड किए रोल एंड फंक्शन कोन लिमिटेशन कोन वी विल डिस्कस नेक्स्ट अछि कैबिनेट सेक्रेटेरिएट कैबिनेट सेक्रेटेरिएट before that we need to know what is a cabinet ଆମେ ଜାଣିଛୁ pm and council pm and council head of the government real head in actual term it is pm and cabinet what is cabinet pehla cabinet minister for example finance ministry ro je head se hela cabinet minister the head of a particular ministry is cabinet minister so cabinet consists of pm and all cabinet minister understand these things ଯେତେବେଳେ ଆମେ यूनियन कैबिनेट कहूचु it consists of pm and all cabinet minister ହେଲା pm and all cabinet minister consist of union cabinet ठीक अछि the pm and all cabinet minister they are real decision making authority they are the real decision making authority and they get secretariat assistant from cabinet secretariat ହେଲା so cabinet secretariat who is administratively headed by the cabinet secretary who is the senior most IAS officer in central government so cabinet secretariat aid and advise the union cabinet clear यूनियन कैबिनेट कौन यूनियन कैबिनेट को सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट दिए कैबिनेट सेक्रेटेरिएट who is politically headed by the pm and administratively headed by the cabinet secretary okay next ला pmo ये तीनटा बहुत important frequently asked question pmo pmo means prime minister office अच्छा तो पीएम हमरो हेड ऑफ द गवर्नमेंट रियल हेड ऑफ द स्टेट चीफ एग्जीक्यूटिव सो पीएम को
secretariat assistant দিয়ে কি prime minister office headed by principal secretary PMO, headed by principal secretary PMO. Okay, so in PMO we will discuss what is PMO, that the importance of prime minister as the chief executive, real executive, and he gets secretariat assistant from uh, cabinet secretariat, a secretariat organization which is known as prime minister office, headed by principal secretary PMO. Role and function of principal secretary, criticism of PMO, solution, second ARC, है ना? तापर ministries and department paper 1 unit 3 भी थिला that the whole activity of government of India is divided into various ministry and department, division of work, specialization. So that is 4P basis of departmentalization by Galik, ministry and department, advisory body. There are certain bodies that give advice to the government, advisory body, boards and commission, paper 1 रे भी थिला, field organization, the headquarter and field, role of field organization, field कौन करे, planning commission ଏବେ ନାହିଁ, no need to read, and finance commission, election commission, ଏଠି ବି ହେଲ୍ପ କରିବ and GS ତମର ପଲିଟି ରେ ବି ହେଲ୍ପ କରିବ, GS to polity governance, finance commission, election commission. But the frequently asked question is central secretariat, prime minister office, cabinet secretary. ए वर्ष भी देखो क्वेश्चन ଆସିଯିବ, ए वर्ष देखो prime minister office ଆସିଛି, PMO and finance commission ए ବର୍ଷ ଆସିଛି, କେବେ ଆସେ ନାହିଁ, ଏ ବର୍ଷ finance commission ଆସିଛି, cabinet secretary ହେଲା। तो बहुत इजी क्वेश्चन, फाइनेंस कमिशन 10 मार्कर आसीथिला, फाइनेंस कमिशन रे सेकेंड एआरसी रिपोर्ट रे एंड करिवो, चीफ सेक्रेटरी रे सेकेंड एआरसी। देखो सेकेंड एआरसी इज वेरी इंपोर्टेंट बिकॉज़ सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमिशन रिपोर्ट एटा मस्ट सब आंसर रे wherever it is necessary, एटा कंपल्सरी। if finance commission second ARC this report financial administration, chief secretary second ARC 15 report related to state and district administration. What is second ARC recommendation for chief secretary, second ARC recommendation for finance commission, इसको लिखिले ही मार्क आसीबो 330 34 you have to write 300 क्रॉस करिया पाई तुमको स्पेशल एफर्ट दबाको पड़िबो, नहले होबने बहुत पिलाकर 300 250 260 अछि। The reason is that 300 cross mine you have to give special, your answer should be different from other, you must write something extra. State and district administration, governor, এটা পলিটির भी পড়িছো, গভর্নর পলিটির भी जीएस रे क्वेश्चन आसी पारे, चीफ मिनिस्टर सीएम, सेक्रेटेरिएट, चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टरेट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन. So block administration, you people will first start work in block administration. Frequently asked question, chief secretary, secretariat, directorate, district administration. Frequently asked question. If you look into it, district collector role asichi, district planning committee, district collector, state secretariat, district collector, state administration, relationship between executive agency and secretariat, pattern of departmentalization, chief secretary, best.
Governor, Chief Minister question ही आज आसीने. No question asked on Governor or Chief Minister. Chief Secretary or District Collector. Block ରୁ ବି ଆଜି ଯାଏ Governor ର question ଆସିନି, CM ର question ଆସିନାହିଁ, Block ର question ଆସିନାହିଁ. Secretariat, Chief Secretary, Directorate or District Administration. But Governor and Chief Minister ଏଇଟା ଜାଣିଲେ ତମକୁ it will help in politics. ଏ ବର୍ଷ ବି GS2 ରେ question ଆସିଥିଲା Governor ର bill, Governor's authority related to a state bill. GS2 ରେ ଆମର ଯଦି ମାର୍କ ଥିବ ଦେଖେଇବି ତମକୁ. अच्छा मार्क देखो तमे शिवराम स्वाई और GS2 रे मार्क देखो 187. मैंने GS2 ही तो खाली सिलेक्ट कर देछि 187 इन GS2. बाकी ऐसे 128 GS1 117 119 117 ऑप्शनल 280 और 187. रिमार्केबल मार्क. तो देखो दुईटा जिंस GS2 और ऑप्शनल ए दुईटा बहुत स्ट्रांग हे गले तमरो 180 GS2 रे आनो 320 ऑप्शनल रे आनो 500 मार्क एडी होरानी. इट मेक ए सीरियस डिफरेंस. जो माने भी GS2 रे समस्त भलो मार्क आसी जहार भी मार्क देखैछि किछ लोकंकर कम आसी सेति में मार्क कमी जाईछि. आरो देखो 183 सारस्वत आरो भी 183 मैंने GS2 बहुत हेल्प करी पिला को. GS2 161 GS2 176. देखो ऑप्शनल माने GS राव कोड एते मार्क नाही ओनली GS2 176 GS2 172 GS1 83 123 126 GS2 176 जे भी रैंकर अछि ना सिलेक्ट हे कि देखो GS2 रे मार्क थिबो भयंकर. GS2 आर कमी गला 129 चिलिकार कमी आइछि 135. माने इमेजिन करो जदि से 160 भी पाइतिले टॉप 10 रे थांदा ये. One 35 देखो 184 संतोष पॉवर्टी 290 GS रे 194 110 GS3 रे 150 131 GS2 179 176 आरो 180 रैंक 10 रो 180 GS2 बाकी GS4 रे बहुत कम अछि 105 GS1 रे 123 GS3 रे 143. ओके GS2 रे बहुत हेल्प करबो एटा. अच्छा सो गवर्नर चीफ मिनिस्टर किछि किछि समस्त GS रे पढि दिबो. आई एम नॉट गोइंग इनटू दिस. सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टर एटा पॉलिटी रे नाही. बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी एवरीवन नो समथिंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. देखो ओडिसा रे सेक्रेटरीट समस्त जानिछ
So what is the name of Odisha Secretariat? The name of Odisha Secretariat. Yes. Lok Seva interview question. Lok Seva Bhavan. The reason behind it is Lok Seva means people who work in this secretariat, their main aim is to serve citizen. That's why it is known as Lok Seva Bhavan. Odisha Secretariat, Lok Seva Bhavan. And what is secretariat? All ministry and department placed here. That we have 40 department secretariat. Secretariat, Odisha Secretariat ର political head ହେବେ chief minister, administrative head ହେବେ chief secretary. And when we say secretariat means the function of secretariat is policy formulation, law formulation, advice to political executive. They give advice to political executive. Hela state secretariat. We will discuss 20 mark asipare. State secretariat कौन? Role and function of state secretariat. Limitation before state secretariat. है and why secretariat is known as Lok Seva Bhavan. देखो एटा हमको ना suppose ओडिशा secretariat रे क्वेश्चन आसिला ठीक है समस्त लिखिले बट तमे एंड कोन करलो समस्त लिखिले these are function 10टा function लिखिले you end that Odisha secretariat is known as Lok Seva Bhavan. एटा गोटे तमरा आंसर रे टिके एनरिचमेंट हे गला एंड second ARC रो 15th report that is state and district administration recommendation to improve efficiency of secretariat. Hela recommendation to improve efficiency of the secretariat point 1 point 2 point. So these things make your answer different from other. बाकी माने जोटी 250 पाइबे 260 पाइबे तमे सेठी तमर मार्क 300 स्कोर करियो. And I have a very simple calculation. देखो तमे लिखुछो 10टा क्वेश्चन 15 marker and 5टा क्वेश्चन 20 marker 150 250 mark. So my strategy is 50 plus 1 ए वर्ष जहा कहितले समस्त 50 plus 1 means गोटे 15 marker क्वेश्चन रे 50 mark केते हला 7.5 8.5 8.5 into 10 85 mark हला गोटे 20 mark क्वेश्चन रे 50 mark हला 10 plus 1 11 11 into 5 55 तो 55 95 और 55 140 mark हेलानी पेपर 140 पेपर 2 140 so 280 माने मिनिमम 280 mark माने 50 plus 1 सब क्वेश्चन हमको 50 plus 1 आनिबार अछि बहु क्वेश्चन अधिक आनिबो तुमको 20 mark पर बहुत क्वेश्चन रे तुमको 13 14 में मिल जाई पारे 15 mark पर बहुत जगह रे तुमको 9 10 में मिल जाई पारे तो एमिति हेले किसी क्वेश्चन रे तुम मार्क टा 320 क्रॉस कर लियो सिंपल सब आंसर को परफेक्शन रे लिखिबा मिनिमम हम पई गोटे आंसर मिनिमम मार्क होची 20 मार्क रो 11 अब एठी मिनिमम मार्क होची 8 मैक्सिमम
11 ରୁ 14 हो पारे 8 ରୁ 10 हो पारे बहुत भल लिखिले 15 भी देबे तुमको तो जे 334 आनी ची ताको बहुत क्वेश्चन 15 मार्क भी दिया हेतिबो बिकॉज एटा 50 प्लस 1 हेले 280 होची से आनी ची 330 धरो तो केते 50 मार्क प्लस तो गोटे पेपर रे 25 मार्क तो 15 टा क्वेश्चन रे 25 माने कोटी 2 मार्क कोटी गोटे मार्क है ना so this is simple calculation 50 plus 1 strategy 50 plus 2 strategy रे आ मार्क बढ़ी जीवो 50 plus 2 strategy 9.5 into 10 12 into 5 95 60 5 155 155 155 310 किसी क्वेश्चन रे तुम पाई जीवो 14 मार्क भी मिली जीवो किसी 20 मार्क रे 14 मार्क किसी 15 मार्क रे 10 मार्क तो 330 मार्क छाड़ 330 ठीक अच्छे से भाग्य बट तुम्हें आराम रे 300 प्लस तो करि पारिबो जोड़ा गोटे ऑप्शनल तरफ रु तुमको सिलेक्ट करबा पई 300 मार्क इज सफिशिएंट गोटे ऑप्शनल रो कंट्रीब्यूशन जीएस रो भी अछि सो 300 प्लस इज श्योर मार्क आसीबो 330 मु गारंटी दे परिबेनी 330 सेटा इवैल्यूएटर ऊपर डिपेंड करूची तमरो आउ टिके कोन भलो लिखिछो सेटा इवैल्यूएटर ऊपर छाडी दियो बट आमे हमर हार्ड वर्क रे आमे हमर बेस्ट आंसर राइटिंग रे आमे 300 प्लस करि जिबा 300 रु 330 टा सेटा सम अमाउंट ऑफ लॉक इज नीडेड इवैल्यूएटर रो मूड ऊपर डिपेंड करूची बट हां आमे एमिति आंसर लिखिबा कि हमको जेमति 300 तो मिली जिबा कथा हमर टारगेट ही जिबा 300 प्लस एगेन कहूची खाली प्रोवाइड रो आंसर रे तमे सिलेक्ट हे पारिबो नाही नमस्कार बिकॉज गोटे पिला हमर संदीप 2327 पीए रे आनी की भी he cannot get through खाली प्रोवाइड तुमको सिलेक्ट करे पारिबो नाही जीएस रो भी कंट्रीब्यूशन दरकार बट यस प्रोवाइड रो मिनिमम गोटे नमस्कार प्रोवाइड रो 280 रो कंट्रीब्यूशन 300 लाउ फॉलो रैंक इंप्रूवमेंट ही जीवो सो दीटा इंसो एबे भी कहि दोची तमरो प्रोवाइड एंड GS2 these two will help you out देखो सेटा केही जानि नांती मेंस केबे हबो ओपीएससी जेबे जाय न कहि जे तमे यूट्यूबर मानको कथा सुनो नाही हैला डोंट लिसन टू यूट्यूबर ठीक अछि एमान कथा सुनो नै ओपीएससी जेबे करिवो से कहिवो एंड एमिति भी ओपीएससी नुहो कि 2 मास रे करे दबो छाड़ एमान कथा सुनो नै हैला फर्स्ट डिसेंबर 15 रे प्रीलिम हेले रिजल्ट तो मासे लागिवो रिजल्ट आसे पे जनवरी 15 रिजल्ट आसीबो फेब्रुआरी रे केमति हबो हैला छाड़ एमाने के बहुत लोग बहुत कथा कहउछन कहा कथा सुनो नै जेबे ओपीएससी करेला करेला बट ओपीएससी न कहबा जाय डोंट लिसन टू एनीवन केही किछि जानि नाहंती खाली स्पेकुलेशन एंड तो माने एठी अछो देखु दबो प्रीलिम टाइम रे स्पेकुलेशन मेंस टाइम रे स्पेकुलेशन सेरा गुडो किछि लोक अछंदी यूट्यूबर मानो किछि काम नाही से माने खाली डेट देबे तापरे हां रिजल्ट रो स्पेकुलेशन एथरा मेंस टाइम रे देखिथिबो 10 दिन पर रिजल्ट 5 दिन पर 7 दिन पर आज आसुची काली आसुची सब चक्कर पड़ो नै you just go with your flow
ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ପରୀକ୍ଷା ଯେବେ ବି ହେଲା, ମୁଁ ଏତିକି ତମକୁ ଏସ୍ୟୁର କରୁଛି ଅନ୍ୟ ଅପସନାଲ ଠାରୁ ତମେ ଭଲ କରିବ। କାହିଁକି ତମେ ଭଲ କରିବ ଅନ୍ୟ ଅପସନାଲ ଠାରୁ ମୁଁ କହୁଛି, एज ए पॉवेड ऑप्शनल स्टूडेंट तो सिलेबस छोट, आई विल कवर एवरीथिंग, मु सब कवर कर देबी, सेटा मोर मो ऊपर छाड़ी दियो, आई विल कवर एवरीथिंग जेमिति हो। तो थोड़े क्लास देखी दबो, थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखी दबो, एंड ए पॉवेड पढ़ाटा तुमको जीएस2 रे बहुत एफर्ट दबा दरकार नहीं। तो अन्य ऑप्शनल पिला से माने जीएस2 भी पढ़िबे, ऑप्शनल भी पढ़िबे, तो तमे बेटर करिवो, बाकी मानक अपेक्षा यू विल डू बेटर जेबे होउची हो। प्रिलिम रो मासे परे हेले भी ना तमे बेटर करिवो, डोंट वरी, बिकॉज समस्त जहाँ डेट हबो से दैट इज फॉर एवरीवन, जोटा डेट हबो से समस्त ପାଇଁ ହିଁ हबो, सब ऑप्शनल पिलांग ପାଇଁ हबो। कोविड तो फिर भी कंपैरेटिवली सिलेबस अछि, इजी अछि, हे जिवो। थिंक अबाउट ज्योग्राफी ऑप्शनल केते अछि सिलेबस, केते डिफिकल्टी लेवल अछि हैला। अच्छा तो सेक्रेटेरिएट ही गला, तापर चीफ सेक्रेटरी मिस्टर आहूजा, मनोज आहूजा। Chief Secretary means the senior most IAS officer in a state appointed by the state government. समस्त जानिचो। And Chief Secretary is the administrative head of the state secretariat, principal head of the uh, principal advisor to the CM. So one important thing, center रे cabinet secretariat plus PMO सेम काम करे चीफ सेक्रेटरी, PMO रो प्रिंसिपल सेक्रेटरी। So cabinet secretary and principal secretary PMO is equivalent with chief secretary. Okay, so it is important, it is important कि cabinet secretary and PMO रो principal secretary रो कामो chief secretary करियो। So chief secretary रे पुणी second year से report। So chief secretary question this year जो आसीथिला chief secretary question एठी लेखि देछि, chief secretary 10 मार्क, chief secretary रो 10टा रोल, and the importance of chief secretary that no office in central government is equivalent with chief secretary, and the role of chief secretary is combinedly performed by cabinet secretary and principal secretary PMO in center. Second ARC 15th report, state and district administration, recommendation for chief secretary। देखो पढ़िबा ठारू इंपोर्टेंट आंसर राइटिंग, बारंबार कहूची मु जो माने मेंस देइछो गोटे क्वेश्चन रो आंसर कोन लिखिबो सेटा इंपोर्टेंट। चीफ सेक्रेटरी बाबद रे तो हजार हजार इंफॉर्मेशन अछि, बट गोटे 10 मार्कर रे 10 मार्कर रे 150 वर्ड भितरे यू हैव टू कंसोलिडेट एवरीथिंग, एंड कंसोलिडेट माने सब इंपोर्टेंट जिंस माने ही लिखिबो तमे, सीधी बात नो बकवास। कि चीफ सेक्रेटरी ये चीफ सेक्रेटरी रो रोल एंड फंक्शन, चीफ सेक्रेटरी कंपैरिजन विथ कैबिनेट सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी PMO, सेकंड ARC ऑन चीफ सेक्रेटरी। तो इवैल्यूएटर तुमको तापर गोटे इवैल्यूएटर कन्विंस हबो कि अरे माने गोटे पिला 10 मार्क रे सब इंफॉर्मेशन दे देछि, सो ही विल गिव यू 7 मार्क, 7 दबो तुमको। आ गोटे पिला खाली चीफ सेक्रेटरी लिखि दिबो दी प्रकार आंसर, गोटे पिला खाली चीफ सेक्रेटरी लिखि देछि 8टा 10टा पॉइंट, सेटा गोटे आंसर। तमे चीफ सेक्रेटरी 10टा पॉइंट लिखिछो, ताको तमे कंपेयर करिछो कैबिनेट सेक्रेटरी प्रिंसिपल सेक्रेटरी एक्स्ट्रा पॉइंट, तमे सेकंड ARC रो 15th रिपोर्ट रो रिकमेंडेशन लिखिछो, डेफिनेटली यू विल गेट मोर मार्क्स।
ଏଥିରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ ହେଲା। ମାର୍କ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଏତେ ପିଲାଙ୍କର ମାର୍କ ତ ଦେଖେଇଲି ଏଥର, ମାନେ କାହାର ମାନେ ଖରାପ ମାର୍କ ହିଁ ନାହିଁ, ବିକଜ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଗୋଟେ ପାର୍ଟିକୁଲାର ପ୍ରକାର ଆନ୍ସର। ଆଚ୍ଛା ବହି, ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ବହି, ଦେଖ ମୁଁ ବହି ପଢି, ମୁଁ ଯୋଉ ବହି ଲେଖିଛି, ୟେସ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଟାଇପ ଅଫ ନୋଟ୍ସ, ବଟ୍ ଏ ବୁକ୍ କ୍ୟାନଟ୍ ଟିଚ୍ ୟୁ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଏ ଆନ୍ସର। ବହି ତମକୁ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଶିଖେଇବନି ଆଇବିସି ମେଥଡରେ। ବହି ତମକୁ ଶିଖେଇ ପାରିବ କି ନାଇଁ କି ଏଇଟା ଏଇଠି ଲେଖ, ସେଇଟା ସେଇଠି ଲେଖ। ବହି ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଇଛି ତମେ ପଢିକି ବେସିକ ଜାଣିପାରିବ, ବଟ୍ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ସେଇଟା ଥରେ ଜାଣିଗଲ, ଆର୍ଟ ଅଫ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ହେଇଗଲା ତମର, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ରାଇଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ଦେଖ ଏଭ୍ରିୱାନ୍ नो ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ। ଆଚ୍ଛା ତମର କଣ ସ୍ପେଶାଲିଟି ଅଛି ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ? ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବାବଦରେ ଯିଏ ଜିଏସ୍ ବି ପଢୁଛି, ଏନି ଅପସନାଲ ପିଲା ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କଣ ଲେଖିବ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ବାବଦରେ? ତମେ ଲେଖିବ ରୋଲ ଅଫ ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଇନ୍ फिस्कल फेडरलिज्म, फाइनेंस कमीशन इन सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन, फाइनेंस कमीशन सेकेंड एआरसी रिपोर्ट। Okay, you will get extra mark only when you write some extra point. মানে ফাইনান্স কমিশন সমস্ত লিখিবে, বাকি মানে 10 রু 4 পাইবে, তুমি 10 রু 7 পাইব। চিফ সেক্রেটারি গলা ডাইরেক্টরেট, डायरेक्टरेट और दिस इज नोन एज लाइन एजेंसी है ना। लाइन एजेंसी जिए पॉलिसी इंप्लीमेंट करे, लॉ इंप्लीमेंट करे। लाइन एजेंसी हु इज इंप्लीमेंट पॉलिसी, हु इज इंप्लीमेंट लॉ, डायरेक्टरेट। So this is staff and line, डायरेक्टरेट हु इंप्लीमेंट पॉलिसी, जोड़ा कि आमे पेपर 1 रे मु डिस्कशन करथिली, लाइन डिपार्टमेंट कोन, स्टाफ डिपार्टमेंट कोन, दैट थिंग। एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट डीएम, रूल ऑफ डीएम, एठी भी सेकंड ईयर से कथा आसीबो। ओडिसा रे किछि यूट्यूबर अछंती, दे देमसेल्फ नेवर क्लियर प्रीलिम, ସେମାନେ ନିଜେ କେବେ ପ୍ରିଲିମ୍ କ୍ଲିୟର କରିନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି ବହୁତ ହେଲା। ସେମାନେ ଏଇ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବେ, ପ୍ରିଲିମ୍ କେବେ ହବ, ମେନ୍ସ କେମିତି ହବ, କଣ ବହି ପଢିବା କଥା, ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଆସିଗଲେଣି। ତ ସେ ସବୁ ଦେଖ ନାହିଁ ବେଶୀ, ତମେ ତମର ଯେତିକି ପଢୁଛ ପଢ, କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ତମର ପଢା ଚାଲୁ। ଯେବେ ଏକ୍ସାମ हो, ମୁଁ ଯେମିତି କହେ, you should always be war ready। ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ हो, ପ୍ରିଲିମ୍ ସରିଲା ନେକ୍ସଟ ଦିନ ପଢା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। You should not be wait for the prelim result, irrespective of your performance in prelim। এটা ବି ସମସ୍ତେ ପଢିଛ। ଦେଖ क्वेश्चन अलगा आसे, सिलेबस तो वेरी सिंपल, माने गोटे वे रे देई देछि। क्वेश्चन आसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लोकल गवर्नमेंट, प्रॉब्लम ऑफ लोकल गवर्नमेंट, पॉलिटिकल फिस्कल डायमेंशन ऑफ 73rd, पॉलिटिकल फिस्कल डायमेंशन, ओडिशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, फंक्शनिंग ऑफ पंचायती राज, ब्रीफ अकाउंट ऑफ छाड़ो। So here actually we will discuss 73rd and 74, their structure,
73rd is rural government, 74 is urban government. The structure, three-tier structure, 8 type. The function, 29 functional item, 18 functional item. Finance, from where it get finance? Tax source, non-tax source, central grant, state grant. What are the problem face? Financial problem, functional problem. Okay, so it will help you in GS2 also. Acha. All India service, central service. Simple thing. এটা সমস্যা I think জানিଥିବ all India service. Three service, IAS, IPS, Indian Forest Service. There are only three all India service and rest all are central service. So difference between all India service and central service is, देखो member of all India service recruit trained by center, but they work under both center and state. This is a characteristic of all India service. They are recruit trained by central government, but they work under both center and state. ହେଲା? And the penal action or penalty, penalty for all India service is only with the center. Center can only give punishment to member of all India service and not state. ठीक ଅଛି? So everyone clear what is all India service? They are recruit trained by center, but they work under both center and state. Every member of all India service got a cadre, that is state cadre. The center has no own cadre of all India service officer. People who are goes from state to center on deputation. This is known as tenure system. They work under, like our chief secretary Ahuja, Odisha cadre, but he goes on deputation. Earlier, the DGP, he was on also on deputation. So, member of all India service allotted a state cadre. They work primarily in the state cadre, but they goes under deputation to center, and after working sometimes in center, again revert back to the state cadre. This is all India service. Rest all are central service. Indian Foreign Service, IRS, Railway Service, Audit Account Service, rest all service. DENIPS. So member of all India central service are recruit trained by the center, and they work only under the central government. No relation with any state. So this is central service, state service. Recruitment training promotion. Paper 1 ରେ ପଢିଥିଲା. UPSC ଜାଣିଛ, OPSC ଜାଣିଛ. Easy unit. हाँ, क्वेश्चन किंतु टेढ़ा आसे एठी. क्वेश्चन सिलेबस देखो आ गुडी जिंस जानतो सिलेबस और क्वेश्चन भितरे ना टिके सिलेबस बहुत इजी ऑल इंडिया सर्विस सेंट्रल सर्विस रोल फंक्शन किंतु क्वेश्चन आसीबो सिविल सर्वेंट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट डिबेट सिविल सर्विस इन पॉवर्टी एलिविएशन स्टील फ्रेम evolution of civil service lateral entry generalist importance of bureaucracy public administration role in developing society civil servant loyal
All India service, civil service training। ହେଲା ତ ଆମେ क्वेश्चन ଟା बहुत इंपोर्टेंट। So we need to understand the question, demand of this question। सिलेबस जहाँ इंपोर्टेंट ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताठू अधिक इंपोर्टेंट। Yes, and I have told you that this is the uh, one of the easiest unit because already we have discussed about this in paper 1। आमे एस्टिमेट कमिटी पेपर 1 रे पढिथिबा, पब्लिक अकाउंट कमिटी पढिथिबा, सीपीयू पढिथिबा, सीएजी पढिथिबा, एटा ही पढिथिबा। तो टेक्निकली we have covered this under paper 1। ଆଉ cover केते इजी होना तम ପାଇଁ भाबो माने पेपर 2 रे गुटे यूनिट पेपर 1 रे ही कवर हे जाउची। एंड देखो एटा गुटे बहुत इजी यूनिट, ओनली वन क्वेश्चन। You prepare only one question, that is about niti and done। then Ogmut is a cadre, yes। देखो ऑल इंडिया सर्विस, लिसन गोटे आईएएस जेते बेले एबे अंडमान निकोबर रे गोटे आईएएस जेते बेले होची से डेपुटेशन जाउची अंडमान निकोबर रे किछ कैडर नाही। सेठी भी आईएएस अछंती, पॉन्डिचेरी रे भी आईएएस अछंती, तो सेटा गोटे कैडर करा हेची तांको। हां दे आर ऑल इंडिया सर्विस। तो दिस इज गोटे यूनिट रे गोटे क्वेश्चन, ए यूनिट रे दीटा क्वेश्चन। गोटे क्वेश्चन प्रिपेयर हेलो किछि भी आसु यू कैन आंसर। नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग, बट एठी किछि एग्जांपल मागिछि। हाउ नीति आयोग ट्रांसफॉर्म इंडिया, गिव सम एग्जांपल। Easy unit, it will help you in GS also। like example रे नीति आयोग रो कोन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम, नीति आयोग रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, नीति आयोग इन फार्मर वेलफेयर, ट्राइबल वेलफेयर, ये सब लिखियो पड़िबे एग्जांपल। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन what is welfare administration? Administration dedicated for citizen welfare is welfare administration। Administration that is dedicated for citizen welfare is welfare administration। So administration जेटा खाली welfare रे अछि, which focus on welfare is welfare administration। And human right, here we discuss about NHRC, OHRC and machinery for welfare administration at national and state level, like Central Social Welfare Board, State Social Welfare Board, Special Organization Welfare of Scheduled Caste and Scheduled Tribe, Welfare Program of Women and Children। Comparatively easy unit, बेसी किसी नहीं, मेन कॉन्सेप्ट सब अछि पेपर 1 रे। तो एठी माने क्वेश्चन में डायरेक्ट आसे डिस्कस मेजर वेलफेयर स्कीम, ह्यूमन राइट अमेंडमेंट एक्ट, सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड,
पेपर 2 रे तमे देखिबो मोस्टली डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो, बट तमरो आंसर टा भलो होबा कथा। पेपर 1 रे इनडायरेक्ट क्वेश्चन आसे, एंड पेपर 2 यूनिट 10 this already cover in paper 1, paper 1, paper 1, paper 1 8 रु 4टा पार्ट आमे पेपर 1 रे कवर करी सारी छु। एटी खाली आमे खाली ताकू रिवीजन करिबा। आईटी एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एंड परमानेंट एग्जीक्यूटिव रिलेशन, एटा थिला एम्प्लॉयर एम्प्लॉयी रिलेशन, लोकपाल लोकायुक्त पेपर 1 यूनिट 5 रे आमे डिस्कशन करिछु, आईटी पेपर 1 यूनिट 6 रे, एटा पेपर 1 यूनिट 8 रे इफ यू रिमेंबर। बाकी नुआ जिनस आमे पढिबा सेंट्रल स्टेट रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट। yes, again it will help you in एठी जो GS3, एठी जो डिजास्टर मैनेजमेंट पढिबा GS3 रे तुमको हेल्प हे जिवो। criminalization of politics and administration, new economic policy and public undertaking, this four part are new। center state relation, federalism, federalism we experience four type of federalism: centralized federalism, bargaining federalism, cooperative federalism, competitive federalism। And nowadays in newspaper we witness two more type of federalism, that is coercive federalism and combative, coercive federalism and combative federalism। And three type of relation between center and state. One is legislative relation, administrative relation, financial relation। Financial relation, as I told, finance commission, all India service, governor, here three list of law making, role of president in state bill, parliament make law from state list, these are legislative relation, administrative relation, financial relation। Emergency provision, conflict between center and state, conflict between center and state, how to resolve, सरकारिया कमिशन GS2 रे आसीथिला, पुंची कमिशन second ARC recommendation, this will give you mark। central state relation you have to write about सरकारिया कमिशन, पुंची कमिशन, second ARC। डिजास्टर मैनेजमेंट देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट आगुरु थिला पोस्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, एबे हे जाईची प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, और ताको हम कहूछु मिटिगेशन। And here we will discuss about
NDMA, National Disaster Management Authority, State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authority, below. PRI in Disaster Management. And এ বছর কোশ্চেন গোটে আসিଥିଲା ভাল কোশ্চেন আসিଥିଲା কি ওড়িশার মিন্স গভর্নমেন্ট অফ ওড়িশার স্পেশাল প্রভিজন রিলেটেড টু ডিজাস্টার. Discuss major initiative taken by Odisha government in disaster management. তো এটা ইফ ইউ মানে কি যদি মানে পুরোনা স্টুডেন্ট মানে মনে থিব କି ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲା କି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେସିଫିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍. ତ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ SDMA ଅଛି, SDRF ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫୋର୍ସ, ତାକୁ ଓଡ୍ରାଫ୍ କହୁଛୁ ଆମେ. ଏଣ୍ଡ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଏଣ୍ଡ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ରୋଲ୍ ଅଫ୍ ତହସିଲଦାର, ବାବୁ ନେବେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଟ୍ରେନିଂ. Every government officer must take disaster related training. Government of Odisha ro kono approach अछि, zero casualty, disaster mitigation, relief and mane disaster center bana heichi, focus on relief and rehab. Bas tapre second year ro third report एटा हमें माने फॉर्चुनेटली मु डिस्कशन हेइतिला, एटा क्वेश्चन भी आसी गला कि गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा रो कोन अप्रोच. तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव, तो ओडिशा स्टेट गवर्नमेंट कोन, एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट compulsory disaster training, dedicated department of revenue and disaster management, zero casualty approach, focused on disaster mitigation. Bas second year se third report. report 20 मार्क पर आसी जाइछि, पिला को हेल्प करि दिबो जहा डिस्कशन हेतिला क्लास रे खुशी रे लिखि दिबे समाने. So disaster management, tapre criminalization of politics and administration, that how criminal element enter into administration, सेटा हम डिस्कशन करिबा. Last, new economic policy and public undertaking. Policy and public sector undertaking. देखो, if you remember, हमें पेपर 1 यूनिट 1 रे पढ़ितिला मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस 1 2 3 2 रे the concept of new right philosophy that promote cut back management, roll back of state, and that new right philosophy India implement hella new economic policy or LPG. Before that only state was there, but post new right philosophy we have state and market. There is a competition between state and market, and you have to perform or perish. If a PSU not perform, compulsory privatized. So new economic policy public undertaking रे LPG आसिला परे PSU उपरे तार कोन impact पड़िछि, that we are going to discuss. What is the impact of LPG over PSU? PSU रो competition बढ़ी गला, PSU रो जो monopoly थिला monopoly कमी गला. Now PSU need to be more competitive.
perform or perish. If PSU not perform optimally, it should be privatized. Okay, so this is analysis of paper 2. देखिल पेपर 2 5टा क्लास लागिला, पेपर 2 गोटे घंटा एनालिसिस हे